डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बीजी सेकंड सेमेस्टर एनईपी सोशियोलॉजी का सिलेबस एंड आल्सो गेस्ट पेपर. तो द सिलेबस इज सेम फॉर मेजर कोर्स एज वेल एज माइनर कोर्स. तो सेकंड सेमेस्टर मेजर कोर्स SOC 222J Sociology Social Institutions. Total credit is 6, theory 4, tutorial 2. तो दैट मीन्स आपका थ्योरी में 60 मार्क्स का पेपर आएगा और 24 पास मार्क्स होंगे, मिनिमम मार्क्स. कोर्स डिस्क्रिप्शन, दिस द कोर्स डिस्क्रिप्शन. An exposure to the different social institutions will enable the students to appreciate how a subject deals with mundane and private aspects of everyday life, as births, marriages, and family formation can constitute a technical field of study capable of generating contentious issues for academicians. A course on social institutions therefore becomes essential for any student of sociology. Objectives: family, marriage, and kinship are three important and fundamental institutions in the society. This paper aims at introducing these important institutions of society to students in a sociological perspective, while also taking care of the recent academic debates surrounding these institutions, like changes in social institutions. Now, learning outcomes. After reading this paper, the student will be able to understand the various sociological approaches and perspectives regarding the institution of marriage, family, kinship, and religion. They will also be abreast with the various recent debates pertaining to social institutions. So, now in the syllabus, आपके पास 4 यूनिट्स हैं. पहला यूनिट है फैमिली, दूसरा यूनिट है मैरिज, तीसरा यूनिट किनशिप एंड चौथा यूनिट रिलीजन. दीज आर द 4 मेन सोशल इंस्टीट्यूशंस. एंड इन यूनिट फर्स्ट जो आपका है, इसमें फैमिली है. एंड फैमिली में क्या क्या आपको पढ़ना है: ए फैमिली एंड हाउस होल्ड, बी फैमिली स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, देन टाइप्स ऑफ फैमिली, nuclear family, joint family, etc. Changes in family. What are the different changes that has occurred in recent times in the structure, in the structure of family, in the function of family, etc. This you have to study in the first unit. Unit second is marriage. And in this, you have to study a marriage, meaning and significance. Meaning of marriage, what is the definition? What is the different definitions of marriage? Or what is the significance? What is the need and importance? This is what is the significance of marriage. Then rules of marriage, that is endogamy within the group, exogamy outside the group. This. And then types of marriage on various bases. Types of marriage: monogamy, polygamy, and then in polygamy, polygyny, polyandry, etc. Challenges. Group marriage is also one of the type. Challenges. Then you have आपको पढ़ना है challenges to marriage as an institution. और आपका यूनिट थर्ड है kinship. इसमें आपको पढ़ना है basic concepts: incest, affiliation, conjugality, affinity, clan, lineage, and then kinship and descent, unilineal, double, causative descent, and then you have kinship. यूनिट 4 आपका है रिलीजन. इन दिस यूनिट आपको पढ़ना है रिलीजन की मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स. फॉर एग्जांपल एनिमिज्म,
naturalism, etc. And then functions of religion, and D has secularization. What is meant by secularization? Or this is tutorial. Tutorial 2 credits है changing institution of family and marriage, family in transition, marriage issues, society. ये कुछ रेफरेंसेस रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है. अब हम माइनर कोर्स का सिलेबस देखते हैं. माइनर कोर्स एजुकेशन सेमेस्टर सेकंड बैच 2022. सो दिस इज द सिलेबस. ये सिलेबस है आपका. ये भी 6 क्रेडिट्स का है. फॉर दिस इज द सिलेबस फॉर माइनर कोर्स. Minor course sociology. This is also social institutions, same as major course की तरह. ये भी सेम सिलेबस है, सेम रेफरेंसेस हैं. तो मेजर कोर्स का भी सिलेबस सेम है माइनर कोर्स की तरह. तो दैट मीन्स पेपर भी सेम पैटर्न का और सेम डे पर या सेम टाइप का होगा. अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बीजी सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी मेजर माइनर कोर्स का गेस्ट पेपर, और वी कैन सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में से आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे. 7 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं. पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म फैमिली. Question second, define descent. Question number 3, what do you mean by clan? Question number 4, what do you mean by kinship? Question number 5, write a short note on animism. Question number 6, write a short note on totemism. Question number 7, write a short note on naturalism. तो ये 7 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर थे. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको वहाँ पूछे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, identify the types of family. Question number 2, identify some features of marriage. Question number 3, enumerate various types of marriage. Question number 4, analyze the changes in the institution of family. Question number 5, analyze the significance of marriage as a social institution. Question number 6, analyze the challenges to marriage as an institution. Question number 7, differentiate between primary and secondary kins. Question number 8, discuss various kinship usages. Question number 9, explain the concept of incest, affiliation, lineage. Question number 10, explain the meaning and significance of religion. Unit 4 में ही. Question number 11, discuss in detail the process of secularization. तो this was all regarding the syllabus and the guest paper for BG second semester minor major Sociology, University of Kashmir. Thanks for watching.